Okay, good morning, class. So, can you see what is appearing in your screen? Yes, it is Constitution of India. So, today's topic is Constitution. Can you tell me what is the meaning of Constitution? So, in simple, before going to the meaning of the Constitution, first we will have to understand some basic things about the Constitution. Okay, beta? So in previous videos we have discussed about the law. Who make the law? It is legislature. Legislature. And legislature means parliament or state government. Okay, or state assembly. And who constitute the parliament? Generally the laws are or bill is presented by the government. So here we can say a law is made by the government. Okay. So in our country which is democratic country, there are many political parties. Okay beta, we have multi-party system, and all the party have their different views, their different ideologies. In many cases the ideology of political parties is not consonance with the ideology of the other party. ओके किसी भी दो पार्टी की आइडियोलॉजी सेम नहीं होती है बेटा, दोनों की विचारधारा कभी भी सेम नहीं होती है. फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी, सुना है आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में? कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इट इज़ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट विच इट सीक्स टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इक्वली. ओके, व्हाट कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी? Distribute the wealth equally in all the people. On the other hand, Congress believe in socialism and BJP believe in market economy. Okay, and now we know that after every 5 years there is election. ठीक है, हर 5 साल के बाद हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, and it is not necessary that same party will rule over again. ठीक है. So the government of the country keeps changing at election. Now if new government is found by a new party, then it can seek a change all the laws which were formulated by the previous government. It would certainly mean a lot of confusion among the people. So there is need to have such basic law which have to be followed by all the political parties irrespective of their ideologies. These basic laws are in the form of constitution of the country. Okay, अब नई गवर्नमेंट आई, सॉरी नई पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, और यदि वो ओल्ड पार्टी के बनाए हुए लॉ को रिप्लेस करना चाहे तो उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में जो ऑर्डिनरी सिटीजन है दे विल गेट सफर्ड. ओके, जो आम आदमी है वो सफ़र करेगा. क्यों? क्योंकि हर साल 5 साल बाद नियम बदल जाएंगे. तो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिसको हर पार्टी को फॉलो करना ज़रूरी है, एंड दैट बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन किस फॉर्म में? वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में. ओके बेटा.